और जगदम्ब क्रिकेटर्स बल्लेबाजी के लिए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दोनों टीम प्रज्योत और किशोर। तो दोनों टीम प्लीज, कामाक्षी क्रिकेट टीम आपका 12th मैन पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर। पहला ओवर पावर प्ले का और पहली गेंद इस बार अपील, लेकिन वहां पर बिल्कुल कोई गेंद बल्ले में संपर्क नहीं था। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर किशोर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर और स्ट्राइक एंड पर विट्ठल दास पहला ओवर में गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में। आगे निकलकर लगभग फुल टॉस पर घुमा दिया, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। किशोर और किशोर के साथ बंटी। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर मिड ऑफ की तरफ, सिंगल बनेगा स्कोर में और 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने चोर पर सुरक्षित। 7 पर कूद के बंटी, सामने अब किशोर जो सामना करेंगे और विट्ठल दास अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए। जगदम्ब क्रिकेटर्स डोंगरी और उन्हीं के साथ मुकाबला हो रहा है मैदान पर कामाक्षी क्रिकेटर्स शिरोडा। ये टीम आमने सामने जो कि मैदान पर। सामने किशोर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, इस बार गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर में, बड़ा शॉट लग चुका है बल्लेबाजी में पावर प्ले में जगदम्बा क्रिकेटर्स डोंगरी क्रिकेट टीम की ओर से। और देखना होगा 5 ओवर में कितने रन बना लेते। पिछला मैच बहुत ही अच्छा रहा, 1 रन के साथ मैच हाथों से छूटा सेल्डम ब्लास्टर्स क्रिकेट टीम के साथ, और ये मुकाबला इन दोनों के बीच में। बड़ा शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 1 रन पूरा किया। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते गेंदबाज विट्ठल दास के हाथों में, और एक सिंगल के साथ किशोर ने अपने खाते की शुरुआत की। स्कोर आगे बढ़ा 8 रन बिना किसी नुकसान सर। पहले बल्लेबाजी कर रही है जगदम्बा क्रिकेटर्स डोंगरी क्रिकेट टीम। प्रज्योत उर्फ बंटी नॉन स्ट्राइकर इन पर किशोर। आगे निकलकर बढ़िया शॉट इस बार हाफ वॉली पर, एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, मिड ऑफ पर फील्डिंग और 1 रन फिर से जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 9 पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान से। एक बड़ा शॉट पावर प्ले में और विट्ठल दास धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में एक अच्छी शुरुआत मैदान पर जगदम्बा क्रिकेटर्स डोंगरी क्रिकेट टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन अमीर जो कि दिखाई देते हुए अमीर गड़ेकर गेंदबाजी पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर 5 ओवर का मुकाबला। 4 गेंदबाज, एक गेंदबाज को तो 2 ओवर मिलेंगे। लेफ्ट आर्म जो राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए प्रज्योत उर्फ बंटी। इस बार शरीर से थोड़ा सा दूर, बल्ले से दूर गेंद, मिड ऑफ पर फील्डर सिंगल बना। स्कोर में तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया था और 1 रन जुड़ गया और इसी बीच में स्कोर के खाते में। अभी भी सागर 2 मैच बाकी है, 4 बज चुके हैं। देखना होगा क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच, शायद थोड़ा सा परेशानी होगी अंतिम मैच में, क्योंकि दूसरी बार जब बल्लेबाजी होती है तो
इस बार बहुत अच्छी गेंद प्लेड ऑन हुई है, इस बार बल्ले से भीतरी किनारा बोल्ड हुए उस गेंद पर और प्रजोत वापस पहला धक्का लगता हुआ जगदंबा डोंगरिम क्रिकेट टीम को डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर जो कि अमर बल्लेबाजी करने के लिए पहला विकेट वापस इसी के साथ स्कोर हो चुका है 10 रन एक विकेट पर। आमिर गडेकर गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने नए बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर इन पर जो कि उनका साथ देते हुए साथी बल्लेबाज। और वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से दूर गेंद, एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त गेंद मिलते हुए स्कोर में 11 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ एक विकेट पर। आउट होकर वापस किशोर जो बल्लेबाजी में आज कोई खास जो कि बल्लेबाजी नहीं कर सके किशोर, बहुत सस्ते में लौटे। इस बार आड़े बल्ले से मिड ऑन की तरफ लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाई, गेंद को उठाते जब तक फील्ड करते, एक रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ 12 रन पर जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक बहुत ही अच्छा मैच रहा पिछला मैच। आज सुबह के सत्र में, दोपहर के सत्र में रॉयल वॉरियर्स कानकुन क्रिकेट टीम और गुमटेश्वर के मडगांव के बीच में भी बहुत अच्छा मैच जो क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ था वो समाप्त हुआ था और तीसरी टीम रही थी। ये फुल टॉस, इस बार बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमारे का पर एक गगनचुंबी छक्का। थैंक यू डीजे। फुल टॉस गेंद पर एक बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, स्कोर बड़ा 18 पर। यह अच्छी गेंद, इस बार कम बैक करते हुए आमिर गडेकर। एक फुल टॉस गेंद मालूम पड़ा कि बिल्कुल बल्लेबाज को मौका मैंने दिया और उसके बाद एक चेक डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने सामना करते हुए अगली गेंद का। ये फिर से फुलर लेन की गेंद, शरीर पे टकराई, पैरों पे टकराई, देखना होगा अंपायर का इशारा, लेग बाइज का एक रन मिल गया स्कोर में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर के खेल की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त और स्कोर हो चुका है 19 रन एक विकेट पर। शायद बॉलिंग में परिवर्तन सोमेश दिखाई देते हुए, फिर की गेंदबाज, बिल्कुल लेदर क्रिकेट हो टेनिस क्रिकेट हो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर की गेंदबाजी के लिए जिस तरह से नावेली क्रिकेट टीम की ओर से सागर गोपाल गवस को जाना जाता है, अगर वास्को की मैं बात करूंगा तो शेर बहादुर, वो भी बिल्कुल अच्छी फिर की गेंदबाजी करते हैं। और ये नाम है सोमेश का जो कि वो भी बहुत ही किफ़ायती फिर की गेंदबाजी करते हैं। सामने से अच्छी शुरुआत हो चुकी है जगदम्बा डोंगरिम क्रिकेट टीम, वो भी एक बहुत अच्छी टीम है। दोनों टीम बैलेंस टीम है, अच्छी ताकत है, बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है और देखना होगा इन दोनों के बीच में किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है। ओ, स्वागत किया सोमेश का मिड विकेट बाउंड्री पर एक 6 रन के लिए डीजे।
शॉट के साथ स्वागत किया सोमेश का और स्कोर आगे बढ़ा 24 पर 25 पर। छोटी गेंद इस बार शायद चूके गेंद के बारे में पूरी तरह से बल्लेबाज सामने स्ट्राइक एंड पर प्रज्योत और बंटी तीसरा छक्का बल्लेबाजी में अमर साथ दे रहा है 1 पर और सोमेश राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मैदान पर। मिस टाइम कर बैठे कवर पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर कैच पकड़ा और दूसरी कामयाबी मिलती हुई कामाक्षी शिरोडा क्रिकेट टीम को डीजे। मैदान पर प्रशांत 2 विकेट पर 25 सोमेश ने सफलता हासिल की। इस बार फिर से इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर से दूर गेंद डीप पर पहला रन दूसरे रन के लिए आने के लिए खतरा बनेगा। शायद थोड़ी सी देरी कर दी सोमेश ने शायद सामने दौड़ रहे थे थोड़ा सा अंपायर को इशारा भी किया सोमेश ने लेकिन मौका था थोड़ी सी नॉन स्ट्राइकर इन पर देरी कर दी गेंद को स्टंपों पे लगाने के लिए। फिलहाल 2 रन जुड़ गए स्कोर में 27 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट के नुकसान पे जगदंबा क्रिकेटर्स डोंगरिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई फील्डिंग करती हुई कामाक्षी शिरोडा क्रिकेट टीम। बढ़िया शॉट बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ और थोड़ी सी गेंद वहां पर रुक गई नहीं तो लग रहा था गेंद निकलेगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर। फिर से 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल खराब गेंदों पर बड़ा शॉट तीसरा ओवर मैच का चलता हुआ और लगभग 9 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर जगदंबा डोंगरिम क्रिकेट टीम। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच। तो इसी के साथ मैदान पर 3 ओवर समाप्त होते हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 रन 2 विकेट पर 12 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर सागर गोसावी के साथ। Short pitch delivery, there's a chance, but away from Amir. Prashant Kurtikar was on the striking end, takes a single to bring Amar on the striking end. Let's see whether Amar means invincible. Whether he can be invincible in this inning as the 2 big teams are playing to book their place in the quarterfinals. Meanwhile, requesting captain of Spartan and captain of MS Cricketers kindly come for toss. Switch, it was the attempt. No connection between bat and ball, but ball touches the legs and travels towards the mid-wicket. Keeper Amit Naik gathers the ball to conclude a single. A single takes the total to 31. 4th over in progress. Prashant onto the striking end. Again a good pacey delivery. Prashant shuffling down the track. No connection, allows the ball travel to the keeper. Amit the safe pair of hands behind the stumps. And Amir now left arm round the stumps. Switch hit, there's a better connection into the gap. Ball racing away from the fielder.
Ball wins the race and 4 runs on to the scorecard. With that, score moves to 35. We are into the 4th over. Right now, the current run rate is exactly 10.25. So if they continue with this, then definitely half century is on. But Jagdamba cricketers will be looking much ahead of that. Let's see what is going to be approach. Amir to continue. Another switch it on to the legs. A chance of a run out. Direct throw, my dear. Missed. Shy at the stumps at the non-strikers end. But that was the need of the hour. If he has to hit, then definitely there would have been fall of wicket. Such chances are to be taken. And that extra run takes the total to 37. Another switch, it has connection. Amit going to catch, but a ball drops right in front of him. Another single. Prashant Kurtikar maybe knows the strong breeze is flowing from his leg side. That's why trying to go for that switch hit to get the advantage of the strong breeze. But unable to connect properly. So after completion of 4 overs, score is 38 for the loss of 2 wickets. DJ. So new man with the ball is Vishwajit with a very long run up. Maybe the youngster. I've seen him bowling. He generates some deceptive deliveries. And now Prashant Kultikar is on the striking end. First delivery plays through the covers, but straight to the fielder at the wideish cover point area. Amir Gadekar stops the ball, and now we can see the pack of fielders going back to the boundary rope as a right-handed batsman. Amar is on the striking end, and that single takes the total to 39. Final over in progress as a right-handed batsman is on the crease. Definitely there will be change in strategies. Meanwhile, a strong strike, chance of a catch, but ball drops away from the fielder. Prashant running very hard, takes couple of runs. So both the captains, please note, MS Cricketers has won the toss. The matches from the second round onwards will be played for 4 overs per inning because of the time constraint, as we don't want bad light into the play. That's the decision from the organizers. Meanwhile, another strike along the carpet. Whether they are going to run for the second. Ball is away from the fielder. Somesh with a very strong throw. Oh my dear, just missed by a couple of inches. And it was an awkward bounce for Amit Shirodkar. I beg your pardon, Amit Naik, all the way from Shiroda. So the proper surname will be found out, as there's a lot of confusion with his surname. Nothing the less. Amit Naik from Shiroda is the best. Meanwhile, another short arm pull was on, another immense space that have been generated by Vishwajit makes it difficult for Amar to get the elevation and get the timing. Meanwhile, a fall of wicket in form of run out. Third wicket back to the pavilion. DJ. So now the new man in is Saish at the non-striker's end. Prashant is on the striking end. Shuffles down the track, cuts the ball. Fielder inact at the deep point. Amir Gadekar collects the ball quite comfortably to throw it back to the keeper. Final delivery of the first inning.
Saish on the striking end, and what a decent over, that to the penultimate over of the first inning, considered by Vishwajit, has given only 6 runs and have taken wicket so far. Final delivery, Saish on the striking end. Full pitch delivery, good strike, but the fielder is much closer to the stumps at the long on, and attempt was done at this non-striker's end, but Prashant Guttikar is very quick on his feet. A couple of runs to conclude first inning. So after conclusion of the first inning, score is 46, and as I have seen, one person who had just moved in front of the commentary box, the person tells us that Shigmotsav is about to happen, and after looking at that man, I'm not going to take the man. Shigmotsav is on, and the practices will be on this very ground in the evening from 24th onwards. So all the people, all the members of Kulcharam Kakoda Shigmotsav Mandal are requested to report at the ground in the evenings from 24th onwards. So meanwhile, it's break time. DJ, it's time for you. Spartan Molkand and MS Cricketers Rivana. MS Cricketers has won the toss. We are waiting for the decision. Please give your decision because other team also has to be prepared. And we don't want advantage for any team. So requesting MS Cricketers, please give your decision. And they will be bowling first. Spartan, be prepared. You are batting first as well. And here we are about to commence with the run chase. Handing over the mic to a good voice to listen to the ears, not keeping the viewers away from that sweetest voice. Ashokji Naik, as is enjoying his tea. It's time for DJ to play some beautiful music. Are mandatory, and this is the reason where discipline comes in the action as YouTube is live. So 2 openers are already out, Somesh and Sarvesh. A big man along with a tough guy. So let's see how the proceedings are about to happen. And let's see who is going to be at the striker's end. 5 overs, 47 runs to get. In fact, 47 to get from 30 illegal deliveries. So next match is going to be played between Spartan Warriors all the way from Molkonde versus MS Cricketers all the way from Rivana. And Rivana has won the toss and they will be fielding first. So here's the pack of players of Kamaxi Cricketers moving into the dugout. And here we go with the run chase. 47 runs required. And the man with the ball, Kishore. Right arm round is some low, full toss, the fielder in act, but ball goes away from him, drops inside the boundary rope to travel the distance, 1 bounce across the fence. What a way to start the proceedings. Boundary to open the account from Somesh,
Actually, he wanted to hit the ball towards the square leg, but as the ball touches the lower part, lower half of the bat, ball travels away from the mid-wicket fielder towards the cow corner for a boundary. Good delivery, good length, correction in the length works for Kishore as a single is on ball. Takes the inside part of the bat, travels to the mid-wicket for a single. And that single takes the total to 5 to bring the big man. Let me tell you one thing about this Sarvesh, who is on the striking end after this delivery. Swings the bat very hard, tries to hit the ball towards the mid-wicket. Manages to play the ball along the carpet for a single. So as I was talking about Sarvesh, he is the one guy who was out of India for a couple of years. Meanwhile, a good looking shot away from Prashant. Quick fielder can't get it. Then no one will be able to stop it from the fielding side. Second boundary. And that boundary takes the total to 9. So meanwhile, I was talking about Sarvesh. Sarvesh now is the proprietor of Professional Bets. Was out of India, in fact, as he was giving his services abroad in the Arab Emirates. Before going to that Arab Emirates, he has played the inning of his life on this very ground. 9, 10, 10, I beg your pardon. So sometimes it is a testing time for the batsmen as well, whether they are alert. So they are very much alert. 10 on the board. Another straight drive, but the fielder is inact. Prashant Guttikar is not going to miss. Definitely a single. And that brings Sarvesh on the striking end. So as I was talking about Sarvesh, and before going to UAE, he has hit 19 sixes on this very ground to become the champions. Meanwhile, what a strike from Sarvesh. A switch hit is on, played along the carpet, pierces the gap between short third man and the point to reach the ball across the fence. So after completion of 1 over, score is 15 without any loss of wicket. DJ. Track for Somesh as he's covering his face, and maybe the lyrics reminding some humor that I'm the man and look at me closely. Let's see what he can do now onto the striking end as Saish takes the ball in his hand to deliver this second over. 15 runs on the board without any loss of wicket. 47 is the target. So here we go after doing the much necessary settings in the field. Here we go with this second over. Very short run up. Looks to be right arm over the stumps. Somesh on the striking end. Good delivery into the... Oh my dear, there was a chance, but ball dropping just short of the fielder at the extra cover. A chance was created. Good delivery bowled by Saish. Equally well played by Somesh, but could not keep the ball along the carpet. That brings Sarvesh on the striking end. As power play over is concluded, 5 fielders are patrolling the fence. Again, way outside the off stump, umpire immediately calls it as a wide delivery. That wide takes the total to 17.
Another switch hit, but a keeper misses the ball. A throw at the non-striker's end, and the single is on in form of byes. Score moves to 18. So far, a decent delivery has been pitched by Saish, making it little difficult, little headache for the batsman not getting the elevation. Let's see whether Saish can continue with the similar sort of deliveries, or Somesh is going to clear his intentions. Oh my dear, shuffle down the track, chance of a catch to fielder running. Let's see who wins. On a catch was about to be taken. Finally drops the ball, but a good effort from the fielder. And the ball races across the boundary rope. Maybe his foot touches the boundary rope. That is why 4 is the signal from the umpire. That boundary relieves the pressure from the Kamaxi dugout, and the score moves to 22. Oh my dear, that connection has made it quite clear. That ball will be on the roof. What a shot from Somesh onto his back foot, shifts his balance to get the elevation and the space to heave the ball over the mid wicket. Sixer takes the total furthermore to 28. Switch hit is on into the gap as no fielder is patrolling the fence. A lot of vacancies offered, and the challenge accepted by Somesh. A sixer and a boundary from the batter Somesh. Score moves furthermore to 32. Saish proving little costly in this over as a field was spread. Still Somesh managing to get the gaps. Again shuffle slightly outside the off stump. A big heave. Fielder under the ball takes a comfortable looking catch. And we have to wait for umpire signal. The spectators from behind were signaling that it is a 6 definitely. The fielder has touched the rope. And that is why the second sixer to be seen in this over from the bat of Somesh. That sixer takes the total to 38. So more 9 runs required. Whether Sarvesh can connect now. His bat has not done the talking in terms of the sixes for what he is known for. Prachod with jersey number 21 on his back, about to deliver the third over. Whether Sarvesh can connect now. Professional is a brand. Professional player on the strike. And the professional player strikes. Fielder under the ball. Whether he's going to catch it? Yes. Sarvesh departs but regains the strike to Somesh before coming back to the pavilion. And another strong prospect. Big name in the world of tennis ball cricket. I can call him international player because he has also visited Dubai to play for a team far away from India. So international player walking with the willow in his hand will be at the non-striker's end. Amit Naik with jersey number 07. And I don't think I have to tell what that 07 means in the world of cricket. So meanwhile he is at the non-striker's end. And here Prajot looks to be in a hurry. Just 9 runs required. Whether Somesh can connect. Shuffles outside the off stump. What a strike. The vacancy was there in the fine leg region. Shuffling outside the off stump. Waited for the ball to come to him and guides the ball over the fine leg boundary. That's a big hit. Just 3 runs required. Somesh looks to be in a hurry now. Let's see whether he can do it. Maybe taking the revenge as he was asked to unmask. Meanwhile, slight fumble. Definitely Somesh taking a single knows that Amit is on the striking end. So better give him some deliveries to face as they will be playing quarterfinals later. So maybe asking Amit to field the wicket
and see how it is. Amit plays watchfully, takes a single, gives the strike to Somesh. Let's see whether Somesh can finish off this match in this over itself. A run to win. And that concludes the match with a boundary. What a player he is. The match trophy from the hands of Viraj, because